Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you, dear student? I hope so you are all fine. Welcome to class 9. Today we are going to start our computer class. Chapter number 1, Fundamentals of Computer. Open page number 34. Question number 3, write long answer of the following questions. Number 1, describe the 5 generations of computer. 5 generations of computer. First generation computer, vacuum tube were used in the first generation computer. Vacuum tube generated so much heat that they had to be cooled by air conditioner. Characteristics of first generation computer: speed was slow and memory was very small. First generation computer were expensive and unreliable. Example of first generation computer are mini maintenance computer or अनेक electronic numerical integrator and computer etc. सेकंड जनरेशन कंप्यूटर अब हम देख लेते हैं. सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में हमारे पास आ जाता है transistor was used instead of vacuum tube. Transistor was faster, more reliable, smaller and much cheaper than vacuum tube. Assembly language was used in these computer. इन कंप्यूटर्स में असेंबली लैंग्वेज यूज़ की गई थी. ट्रांजिस्टर जो है वो इनमें इन्वेंट हुए थे और ये फास्टर थे, रिलायबल थे और चीपर थे और स्मॉलर थे एज़ कम्पेयर टू मतलब वैक्यूम ट्यूब की निस्बत. इसकी एग्जांपल में हमारे पास IBM 7030 आ जाता है, 7780 आ जाता है, 7090 आ जाते हैं. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है थर्ड जनरेशन कंप्यूटर. Third generation computer, integrated circuit ICs are also known as semiconductor chip were used in third generation computer. In chips improve the speed and memory of the computer. Computer consume less electricity, became smaller, cheaper and more reliable than second generation computer. Example of third generation computer are IBM system 360 etc. उसके बाद फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर है. फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर क्या है? फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड LSI का क्या मतलब है कि लार्ज स्केल इंटीग्रेशन एंड VLSI चिप मतलब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप्स. माइक्रो कंप्यूटर्स आर वेरी स्मॉल इन साइज, वेरी रिलायबल, कंज्यूम लेस पावर एंड अफोर्डेबल. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पॉइंट 3 है हमारे पास. दीज कंप्यूटर सपोर्ट मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर दैट कंबाइन टेक्स्ट, इमेज, साउंड एंड वीडियो. एग्जांपल ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर डेवलप इन फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स आर पेंटियम सीरीज, कोर 2 एक्सेट्रा. देन उसके बाद हमारे पास आ जाती है फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर. फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर क्या है? फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर इज रन बाय अंडर प्रोसेस. फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर आर बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI. Scientists are trying to design such machine which can understand natural language and by having and thinking power. Example of fifth generation computers are robot, expert system etc. These are the example of fifth generation computers. So यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 लॉग अटेम्प्ट हो गया. अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास. क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास. राइट अ नोट ऑन मेन फ्रेम, माइक्रो कंप्यूटर एंड मिनी कंप्यूटर. सो इसका आंसर है हमारे पास मेन फ्रेम कंप्यूटर्स वर डेवलप इन अर्ली 1940s. अ मेन फ्रेम कंप्यूटर इज़ अ वेरी लार्ज, वेरी पावरफुल एंड एक्सपेंसिव कंप्यूटर. दे कैन सपोर्ट 100 and even 1000 of user at the same time. The modern mainframe computers that use cutting edge technology. These computers are execute more than trillion instructions per second TIPS. Examples are IBM's Enterprise EC12 etc. These are the example of mainframe computer. नेक्स्ट हमारे पास है मिनी कंप्यूटर. मिनी कंप्यूटर was introduced in 1960s when IC chip were introduced. A mini computer is bigger than a micro computer and less expensive than mainframe computer. Computer can execute billion of instructions per second BIPS. They are also using cutting edge technology nowadays. Example of the mini computer are IBM System 36 and HP 3000. देन हमारे पास आ जाता है माइक्रो कंप्यूटर. और माइक्रो कंप्यूटर के कुछ पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं. माइक्रो कंप्यूटर आर द स्मॉलेस्ट एंड द लो कॉस्ट कंप्यूटर. दीज कंप्यूटर आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन होम एंड ऑफिस. दे कैन एग्जीक्यूट मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड. Microcomputer was introduced in 1970s when microprocessor was developed. For example, IBM, Lenovo series, Dell XP series and HP series. Next question number 3 है हमारे पास. Explain the basic operations of a computer. So question number 3 का आंसर है हमारे पास. The following 4 basic operations are performed by the computer such as इनपुट ऑपरेशन, प्रोसेसिंग, स्टोरेज एंड आउटपुट ऑपरेशन. फिर हमने ये छोटी सी एक डायग्राम ड्रा की थी. इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, देन हमारे पास स्टोरेज आ जाती है. इनपुट ऑपरेशंस क्या है? अ कंप्यूटर इज अ डाटा प्रोसेसिंग मशीन. यूजर इंटर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू अ कंप्यूटर थ्रू कीबोर्ड और माउस. It can also be provided to the computer from a storage devices such as hard disk, CD and USB memory. The input data instructions are stored in memory for further processing. Processing operations.
Microprocessor process the data according to the instructions given to it. The microprocessor fetches the data instruction from the memory and store it in instruction register. The control unit then decodes the instruction to find out which operations is to be performed. After decoding the instruction, it sends signal to other parts of the computer to execute it. Storage operations. The result produced after processing are stored in memory before they are sent to the output devices or permanent storage devices like hard disk. Output operations. The result of data processing stored in memory must be output so that they can be seen by the user. The control unit display the result on the monitor or print it on the printer. Result can also be saved in the storage devices such as hard disk for use in the future. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग: हार्डवेयर इंजीनियर, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर एंड वेब डिज़ाइनर एंड मल्टीमीडिया डिज़ाइनर. सो हम इसका आंसर देख लेते हैं. Hardware engineer design and manufacture computer hardware. Their work involves repairs and maintenance of the computer hardware. They have in-depth knowledge of the internal working of the computer, processing circuit board and another electronic equipment. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर. नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर क्या है? नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंस्टॉलिंग कॉन्फ़िगरेशंस एंड मेंटेनेंस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क इन ऑर्गेनाइजेशन. दे आर इन चार्ज ऑफ द मेंटेनेंस ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दैट मेक अप अ कंप्यूटर नेटवर्क. देन हमारे पास है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर. डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर इज अ पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजाइनिंग, implementation and maintenance of the database in an organization. He is also responsible for maintaining security and maintaining the performance of database. नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास आ जाता है वेब डिज़ाइनर. वेब डिज़ाइनर इज अ पर्सन हु जॉब इज टू प्लान टू एंड क्रिएट वेबसाइट. ही डिज़ाइन वेब पेज दैट इंक्लूड टेक्स्ट, इमेज, साउंड, वीडियो क्लिप्स एंड मेक द वेबसाइट इंटरेक्टिव. HTML मतलब Hypertext Markup Language is the most commonly used language for creating website. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मल्टीमीडिया डिज़ाइनर. मल्टीमीडिया डिज़ाइनर आर द पीपल्स हु ऑर्गेनाइज्ड एंड present information in a easy to understand and attractive manner. They combine text, graphic, animations, audio and video. Multimedia designer create digital image and arrange them in sequence for animation using computer software. They have the skills to edit and manipulate audio video files and usually work in films, TV industries, computer software companies and advertising. तो इसका आंसर है हमारे पास प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर. प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर इंक्लूड वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, शीट्स एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर packages. These software packages are used to individuals to speed up their daily routine tasks by doing their work in an organization and efficient way. Business software क्या करता है? Business software that help in running business in a more efficient way of the improving productivity is known as business software. Some example of the commonly used business software are accounting, sales and marketing, etc. Entertainment software developed to entertain people's games are one of the most popular form of the entertainment softwares. Many games are a lot of fun to play, but sometimes they can also help to improve skills such as types or reading. The term entertainment merges games and education software into the single software. Entertainment software is used mainly for entertainment, but it's educate as well. देन हमारे पास आ जाता है एजुकेशनल सॉफ्टवेयर डेवलप फॉर एजुकेशन पॉपुलर इज नॉन एज एजुकेशनल सॉफ्टवेयर. सो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर प्रॉपर कंप्लीट हो चुका है. हमने इसका पूरा रीड आउट किया, सारा एक्सप्लेन हुआ, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आंसर किए, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर किए. आपने ये सारे चैप्टर के अंदर जितने भी टॉपिक हैं आपने एक एक टॉपिक याद करना है, क्योंकि आपको अंदर से कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन और कोई भी MCQs आ सकता है. आपने अच्छे तरीके से करना है याद, और इसे बहुत डीपली पढ़ें ताकि आप कोई भी किसी भी किस्म की असाइनमेंट आपको दी जाए तो आप वो सॉल्व कर लें. आई होप सो आपको समझ आ गई होगी. सो बेस्ट ऑफ लक डियर स्टूडेंट. खुदा हाफिज़.